हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू साउंड दादा। आज हम सीखेंगे माइनर कॉर्ड्स, सब जो माइनर कॉर्ड्स जो यूज़ होते हैं उकुलेले प्लेइंग में। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो मेजर कॉर्ड्स था। ये जो वीडियो होगा वो ए माइनर, बी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर एंड जी माइनर कॉर्ड्स कवर करेगा। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट कॉर्ड जो है वो है ए माइनर। ए माइनर इज अगेन अ वेरी सिंपल कॉर्ड, वन फिंगर ऑन योर फोर्थ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग नेम्स आर 1 2 3 4। गिटार की तरह ही जो इसके स्ट्रिंग्स होते हैं वो नीचे से ऊपर काउंट करते हैं। सो बेसिकली ये नंबर 1 स्ट्रिंग है, ये नंबर 2 स्ट्रिंग है, ये नंबर 3 स्ट्रिंग है और ये नंबर 4 स्ट्रिंग है। इसके जो स्ट्रिंग नेम्स है वो भी सेम नीचे से ऊपर जो रहेंगे वो ए, ई, सी और जी। Yeah, so 1 2 3 4 A, E, C and G. So let's begin our chords. First जो chord है वो A minor chord. Your second finger comes on second fret, fourth string, A minor. Yeah, same theory applies for B minor, which is दो fret आप अगर आगे लेके जाते हो और ये जो बार इधर जो बज रहा है यही आपको सेम आगे लेके जाना है. So this becomes your B minor. So A minor, B minor, C minor will be one fret here. So either you can play it like this or you can remove this finger. So this becomes your C minor. Yeah. D minor is another simple chord. Your D shape was like this, D major. You have to remove this pinky and you have to add your first finger on first fret, second string. Major, minor. Yeah, so that is your D minor. So the next chord after D minor is E minor. So E minor बजाने के लिए you can play it like this. Like same D shape आगे लेके जाके this fret you block it, or you can remove this third finger and get it down. So this is your E minor. So one variation is like this. Second is yeah. Then is your F minor. ये थोड़ा मुश्किल chord है. So ये आपका first finger fourth string first fret, second finger is on second string first fret, and your third and your pinky goes on third fret first string. Yeah, this is your F minor. And like we play D minor on guitar, or अगर आप गिटार बजाते हो, so if this is your D major, this becomes your D minor. So same thing, this is your G major, this becomes your G minor. Yeah, so F minor and G minor. एक बार recap करता हूँ मैं सब कुछ. So A minor, B minor, C minor और D minor, E minor और F minor and G minor. Yeah, I hope you like it and I hope you practice your ukulele. Thank you for watching and I'll see you soon.